Jen, how do you look at this development? Supreme Court has refused to put a stay on the survey order of the Allahabad High Court. And the Honorable Supreme Court has refused to stay the order passed by the Honorable High Court. And it has been very clear in the today's hearing. Supreme Court has also observed that when the order which has been impugned by them is not before us, before the Honorable Supreme Court, how can we stay the order? So it's very clear the High Court will proceed with the matter on 18th of December on the question of modalities. The next set of the hearing is concerned of Jan 9. What is expected to happen then? See, on January 9, they have challenged the order of transfer, and that order will be adjudicated by the Supreme Court on its own merit on 9th of January. All right, so that was Vishnu Jain, the main petitioner, in fact, who says that this is a big development. We have our executive editor Madhav joining us as well. So no stay as far as the High Court deciding modalities are concerned on the survey, but the court has been asked to keep it in mind that the next hearing in the Supreme Court is on Jan 9. Well, it is a very, very big development because clearly, of course, as far as the court is concerned, the apex court not in any way stalling this particular proceeding from taking place. And in fact, all eyes will be on Monday, where the High Court is also to hear the details and the modalities of the court commissioner's survey and is expected to give more specifics on how this is expected to go around, whether there's a time frame or the composition are, details in terms of the terms of reference and what exactly they would be doing. So many such questions that would be answered by the High Court. So that's a big development at this point of time. One will have to see how things pan out ultimately in terms of what the High Court does. But it does appear that in terms of whether... Okay, Madhav, we have Kapil Sharma of the Shri Krishna Janmabhoomi Trust. अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया, कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि कोई स्टे नहीं है सर्वे पर. देखिए, ये समझ से परे है कि अगर सर्वे का कोई आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने किया तो हम छुपाना क्या चाहते हैं, हम किस बात का एक्शन लेना चाहते हैं. सर्वे है, कोई डिसीजन, कोई निर्णय, जजमेंट नहीं है. सर्वे का तो सबको स्वागत करना चाहिए. एवरीबॉडी शुड वेलकम द सर्वे. अगर सर्वे होगा देन द ट्रूथ विल कम आउट. जो लोगों को गलतफहमी है या जो लोगों ने अपने मन में एक शंका को पाल रखा है, वो दूर होगी ना. अगर सर्वे से हम डर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या चीज छुपाना चाहते हैं. सर्वे होगा, चीजें क्लियर होंगी, सत्य सामने आएगा. सत्य से हम डर क्यों रहे हैं? नहीं, जो मुस्लिम पक्ष की हम बात कर रहे हैं कपिल जी, उनका ये कहना था कि क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पिटिशन और ट्रांसफर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन का मामला जो है वो पेंडिंग है, इसीलिए तब तक के लिए आप कमिश्नर सर्वे पर स्टे लगा दीजिए. ये बात उन्होंने कही थी. देखिए, ये एक मेरी दृष्टि में ये कोई लॉजिक नहीं है उसको रोकने के लिए. ये बताने के लिए कि इसको रोका जाए, इसको डिले किया जाए, ये डिले टैक्टिक्स है. सुप्रीम कोर्ट में जाना भी डिले टैक्टिक्स है. हम तो आभार व्यक्त करते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय का कि उन्होंने इसको तुरंत सुनवाई करके और तुरंत इस पर अपना निर्णय दे दिया. नहीं तो ये डिले टैक्टिक्स है. ये तारीख पर तारीख करके ये चीजों को लटकाना, इससे क्या किसी को हासिल होना है? कुछ भी नहीं मिलना. इससे सिर्फ जो है परस्पर गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है. पैदा करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं. मेरा तो सबसे निवेदन है, आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि वी शुड वेलकम द जजमेंट ऑफ माननीय प्रयागराज हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, एंड वी शुड कोऑपरेट इन द सर्वे प्रोसीजर. और हमें सबको मिलकर इस काम को करना चाहिए. सत्य सामने आना ही चाहिए. सत्य को छुपाया नहीं जा सकता. जो सत्य है वो सामने आएगा. सर्वे रिपोर्ट में सत्य तो आएगा. वो उनके सामने भी तो होगा. वो भी तो रहेंगे सामने. तो अगर हम उस सर्वे से भाग रहे हैं तो हम छुपाना क्या चाहते हैं? चलिए, आप कह रहे हैं सर्वे से भागने का मतलब है कि कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है. थैंक यू वेरी मच Kapil Sharma for joining us on the broadcast with your perspective. Madhav continues to be with us. That was Kapil Sharma of the trust who says, of course, they are welcoming the decision, saying that the truth should come out and let the survey take place. Well, with the Supreme Court intervening in this entire matter, they have very clearly cleared the decks for the survey, at least at the moment, to be carried out. Given the fact that there is no stay as far as the proceedings in the High Court is concerned, there is no intervention as far as this matter is concerned from the Supreme Court. And we've seen this in the past. Very often the courts have said, the Supreme Court particularly has said that it is for the High Court to decide on a matter, and after its considered view, then the Supreme Court can examine if the High Court has followed the 2 points Madhav, we are joined by Harishankar Jain.